I will not say the name Epstein, and I will not say the name Anil Ambani, and I will not say the name. No, I will not say, sir. You are a leader of opposition. Okay. So let me speak, sir. Please, I think so. I will not do it, sir. The whole nation is watching you. I know. I know that. That's why I'm saying it, sir. On one side, you are saying, I will not mention the name. Again, you are mentioning the name. I'm saying I think you are not ready to avoid the name. Please. Okay, anyway. So I will not go into the names. But I would like to say, I think so. You have to speak only on budget. बैठिए किसी आप बजट पे बोलिए ना. There is a general discussion on the union budget for 26, okay, sir, let me speak. 27. Okay. So I think. Nice. So, Speaker sir, so I will avoid that. अब तो आप नहीं कहेंगे उस दिन आपने इनको बोलने तो दीजिए सर. So, the point is that I do not believe that any Indian Prime Minister, including Mr. Modi, would sign such a deal unless there was a chokehold on him. So, I do not, sir, this budget that you have. You and your member have asked a unique question, and I believe that day, then Piyush Goyal has made a statement on the floor of the House. सर मुझे अब कंक्लूड तो करने दीजिए सर. चलिए. नहीं तो यहाँ 2-3 और घंटे लग जाएंगे सर. ओके, थैंक यू. आप चाहते हैं तो मैं लगा देते हैं सर. नहीं, काइंडली कंक्लूड. So, we have buckled on tariffs. We have handed out our data, given up control over digital trade rules, no data localization, free data flow to USA, limit on digital tax, no source code disclosure, and 20-year tax holiday. The most valuable asset that India has and will ever have has been handed over. Our farmers have been left to the mercy of mechanized, massive American farms. Our textiles have been wiped out. Bangladesh now is going to wipe out our textile industry. Our energy security has been handed over. We can't buy oil from who we want to buy oil from. Now, I don't believe any Indian Prime Minister would do this. Logic नहीं है सर. Logic नहीं है सर. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है. सर आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज. सर आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज. बात आ गई. तो this is a wholesale surrender. And it is a tragedy because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture on which there is a case in the United States. He has surrendered. I'm not said anything. एक रुलिंग है. आप रिपीट बार एक चीज का आप रिपीट कर रहे हैं. हमने शुरू से सर आप लोग बैठिए ना. ये बोल सकते हैं. बोलने दो उनको. इसको कोई रूल मालूम नहीं है. पीछे से खड़े हो जाते हैं बिना मतलब का. इनका जितना ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं. सर आपने एक रूलिंग दिया है. मिस्टर राहुल सर बीइंग अ पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ही से मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो आपने रूलिंग दिया है, मैंने तब भी कहा, राहुल गांधी जी ने बार बार रिपीट किया. हमने फिर भी कहा कि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए, हम लोग सुनने के लिए बैठे. आप फिर से रिपीट किया. दो तीन मुद्दे
आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है, यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन। व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग, देयर इज अ सीरियस connotation. Kindly take seat. I would urge honorable leader of opposition, because he is the leader of opposition, all the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will, sir, I will authenticate right now. I've got it. You have to Because, sir, stand. let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly you Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. that you have to just give in advance and that you have No, to no, sir, submit. I will That you authenticate right now. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.